Good morning, my dear students. All of you are most welcome in this morning session of English literature. Here, a very beautiful William Shakespearean poem is being discussed. The poem is Seven Ages of Man. Actually, the poem Seven Ages of Man is an extract from Shakespeare's drama As You Like It. These lines are spoken by a melancholic character, Jakes, in the drama As You Like It in Act 2nd, Scene 7th. These lines describe vividly and wittingly the stages of a man's existence from infancy to old age. बचपन से लेके बुढ़ापे तक की उम्र को 7 अवस्थाओं में विभाजित करके उसने बताया है. दे शो मैन एज एन एक्टर ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड प्लेइंग पार्ट आफ्टर पार्ट इन द ड्रामा ऑफ लाइफ. शेक्सपियर वॉज ए मैन ऑफ द थिएटर ऑफ एन एक्टर, playwright, a shareholder in the Globe Theatre. Therefore, it was natural for him to describe human life in the theatrical terms. Let me discuss in detail the summary of the poem. The poet says that the whole world is a stage on which all men and women simply play their parts. ये संसार एक रंगमंच है जिसके ऊपर मनुष्य, स्त्री, पुरुष आते हैं, अपना रोल अदा करके चले जाते हैं. They are born and they die. Just as players enter, एक्टर्स एंटर प्रवेश करते हैं एंड हैव द स्टेज और स्टेज संभालते हैं. एंड द लाइफ ऑफ ए मैन इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स एंड इट कैन बी कंपेयर्ड टू ए ड्रामा ऑफ 7 acts. Human life has been compared to a drama of 7 acts by William Shakespeare. The first stage is that of the infant crying and vomiting in the arms of the nurse. प्रथम श्रेणी वह है मनुष्य की जब वो नर्स की गोद में, माँ की गोद में चिल्लाता है और उल्टी करता है. बहुत शैशव अवस्था. Next comes the school boy going to school quite reluctantly with his bag of books and face shining with the morning wash. सेकेंड स्टेज बताइए जब स्कूल जाने वाला बालक है और वो कितना रिलक्टेंट हो जाता है स्कूल जाने के लिए, अनिच्छुक रहता है. और सुबह सुबह शाइनिंग चीक्स होते हैं उसके, चमकते हुए गाल जब उसके धोए जाते हैं मॉर्निंग वॉश के लिए. देन कम्स द स्टेज ऑफ ए यंग लवर. तीसरी स्टेज एडोलसेंस की हो जाती है. हीविंग साइज लाइक ए फर्नेस, बहुत ही गहरी गहरी सांस हीव करता है सीना फुला करके, भट्टी की तरह आहें भरता है. एंड राइटिंग ए पैथेटिक पोइम टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज. और अपनी शर्मीली प्रेमिका या प्रेमिका जो भी है उसकी आईब्रोज की ब्यूटी बताने के लिए, उसका फिज़िकल ब्यूटी फिगरेटिव स्टाइल में बताने के लिए वो पोइम्स लिखना शुरू करता है. द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ इज़ दैट ऑफ ए सोल्जर. एक सैनिक की तरह अब वो ट्रीटमेंट करता है. इसके बाद में ही टेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू ओथ्स एंड वियर्स ए लॉन्ग एंड पॉइंटेड मुस्टाच. He is sensitive in question of honor and is ever ready to take up a quarrel on the slightest provocation. फौजियों की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देता है. He is eager to win at the greatest possible risk of his life. Then he plays the part of justice with his good round belly made fat with flesh of the capon, with his stern eyes, precisely cut beard, full of wise maxims and commonplace illustrations. सीनियर व्यक्ति के रूप में थोड़ा सा वो अपने आप को महसूस करने लगता है. फिर उस प्रकार से बुद्धिमत्ता की कहावतें इत्यादि बोलना शुरू करता है. द सिक्स्थ स्टेज मेक्स हिम ए ग्रोटेस्क लुकिंग फिगर. बड़ा ही विचित्र स्थिति हो जाती है छठे स्टेज में. शफिंग अबाउट इन इज easy sleepers with spectacles on nose. छठी अवस्था वो बताई है कि स्लीपर्स में ही घूमना शुरू कर देता है.
हवाई चप्पल में इधर उधर घूमना शुरू कर देता है, स्पेक्टेकल्स उसके चश्मा उसकी नाक के बिल्कुल टिप के ऊपर आ जाता है, pouch on his side and stockings of his youth which now do not fit in his withered legs, टांगें भी मुरझाई हुई हैं जो कभी बहुत मजबूती के साथ सौष्ठव प्रदर्शित करती थी, अब विदर्ड लेग्स हैं, बुझी बुझी हैं। His manly voice now changed into shrill, कभी बहुत बुलंद आवाज़ हुआ करती थी, अब वही आवाज़ चीखने वाली आवाज़ सी लगती है, चाइल्ड लाइक टोन विच प्रोड्यूसेस ए विस्लिंग साउंड, जिसमें विस्लिंग साउंड भी महसूस होती है। द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ विच एंड्स द फिटफुल ड्रामा ऑफ हिज लाइफ इज सेकेंड चाइल्डहुड, और लास्ट स्टेज के अंदर वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो बचपन में दिखता था। व्हेन ही इज़ विदाउट टीथ, without eyes, without taste, in fact without anything, he soon leaves the stage of life forever. Now dear students, let me read the text of the poem, a very beautiful world famed poem, Seven Ages of Man by William Shakespeare. All the world's a stage, all the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their existent entrances, and one man in his time plays many parts. His acts being 7 ages, at first infant, mewing and poking in nurse's arms. Very beautifully the writer says, the poet says that the whole world is a stage on which all men and women simply play their assigned roles. Just as players on the stage enter and leave the stage, men are born and die in the world. One man in his life plays many roles in the drama of life on the stage of the world. All the parts he enacts, जो भी ड्रामा वो इनेक्ट्स करता है, रोल अदा करता है ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड, कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 डिफरेंट रोल्स इन मैन शॉर्ट लाइफ. In this world, from infancy to old age can be conveniently divided into 7 ages. In the second stage of the drama of human life, we see man as schoolboy, as I taught you just 5 minutes back. So once again, all the memories that should be recapped. Then the winning schoolboy with his satchel बस्ता किताबें रखने वाला, and shining morning face creeping like snail, unwilling going to school, and then the lover sang like furnace. Here schoolboy, as a school going child, he is always making complaints about trivial things. He has a bag of books, satchel you can say, on his back. When he is going to school, he has a shining face because it has just been washed by his mother or nurse. He does not like to go to school at all. Reluctant has been used, word reluctant for school going stage. He goes to school unwillingly, so he moves at snail pace. And then the lover sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress' eyebrow. How beautifully Shakespeare delineates the thoughts. Practical aspect of life has been represented. After the school stage, the schoolboy grows up into an adolescent. He is a lover at this stage of life. The quoted lines describe man's role as a lover on the stage of the world. As a lover, he is always sighing, आहें भरता है aloud in memory of his beloved. His sighs are loud and noticeable. He is always sad. He expresses grief on not being near his mistress. He is writing ballads in her memory, praising the beauty of her eyebrows. Very good, very beautifully. And the next stage is then a soldier full of strange odds
and beard like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in cannon's mouth. As a soldier, a young man is always very impetuous, very passionate, very emotional. He is always ready to take an offense. He takes all sorts of new oaths, नई नई प्रकार की कस्में वादे निभाने के लिए, और बहुत तत्पर, बहुत ज़्यादा इंटेंट. He wears a long and pointed mustache, लंबी मूछें. He is very sensitive in questions of honor, और सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाए तो बहुत क्लाइमैक्स पॉइंट पर. He is always ready to take up a quarrel on the last provocation. He is always eager to win glory. उसका उद्देश्य है ग्लोरी जीतना, भव्यता को जीतना, प्राप्त करना, no matter how intangible and transient it is. He seeks glory even at the peril of his life. जीवन को खतरे में डालकर भी वो ये सब कुछ करने को तैयार है. And then the justice in a fair round belly with good cap on, lined with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instances, and so he plays his part. Here, empirical knowledge is being represented by the poet. Actually, in contemporary society, it was the custom to present magistrates with presents, especially it would seem with cap-ons, by way of securing their good will and favor. This fact heightens the satire of Shakespeare's portrait of an Elizabeth Justice of Peace. It gives force and meaning to what seems vague and not concrete. And you can say a generalization has been made. It seems that cap on justice was a term of contempt for bribe-taking magistrate. It was a common complaint in those days that you could not hope to win your case unless you brought country magistrate. A present to such a magistrate was known as a basket magistrate. A very beautiful poem. Really empirical knowledge is being showered by the poet here. The sixth, it shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose. A very vivid picture has been represented by the poet. Actually, he is a painter of words. Through words, our poet, Honorable William Shakespeare, can represent what cannot be represented through commonly words. A very beautiful approach. Spectacles on nose, चश्मा आ जाता नाक के ऊपर, pouch on side, his youthful hose well shaved, a world too wide for his shrunk shank. Ah, what a beautiful language! Shrunk, shank, SS being repeated, and his bag, manly voice turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound last scene of all the ends. This strange eventful history is second childishness and mere oblivion. Sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. Dear students, आपने समझने की कोशिश की होगी काफ़ी. Most of the students from North India, even specially particularly village area of रायसीनगर, गंगानगर etc. प्रिय विद्यार्थियों, मैं फटाफट से फॉर्म एक बार थोड़ा हिंदी के साथ में कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी होगा, फिर आप बार बार डिमांड नहीं करेंगे हिंदी के लिए.
ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, ये संसार एक ड्रामा है, तुलना कर दी है, वर्ल्ड इज़ लाइक स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन, ये मनुष्य जितने भी मियरली प्लेयर्स एक्टर्स हैं, दे हैव देयर एग्जिस्टेंट एंट्रेंसेज, इस स्टेज के ऊपर अर्थात इस संसार में प्रवेश करते हैं और चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक मनुष्य अपने जीवन में कई रोल अदा कर जाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके 7 प्रकार के जो शेक्सपियर साहब ने ये रोल महसूस किए वो ये वर्णन करने जा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में एक इन्फेंट, बहुत ही शैशव अवस्था है, जब बालक माँ की या नर्स की गोद में बाहों में रहता है, उल्टियाँ करता रहता है, थूकता रहता है और वहीं रहता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद स्कूल, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, स्कूल जाने वाला बच्चा हो जाता है, जो कि स्कूल जाने के लिए इच्छुक ही नहीं होता, सैचल बस्ता किताबों का उसकी कमर पे होता है, अनविलिंग टू स्कूल जाने की। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसको जब संसार दिखने लगता है, चकाचौंध दिखती है, तो प्रेमी के रूप में हो जाता है। जब थोड़ा सा वो परिपक्व अवस्था की ओर जाने लगता है तो आहें भरता है, जैसे भट्टी के अंदर अग्नि निकलती है, उसमें से भी प्रेमिका के प्रशंसा के लिए ओ सीना धधकता रहता है। देन सोल्जर, फिर एक पूरे सोल्जर की तरह से ओ बहुत ए मैन ऑफ स्ट्रेंथ, हर वाइज अपने आप को बहुत ही स्ट्रेंथ शो करने की कोशिश करता है। और रेपुटेशन की बात करना, सोसाइटी में रेपुटेशन की होड़ में लग जाता है। और फिर उसके बाद एक स्टेज आती है कि वो अपनी विशेष प्रकार की दाढ़ी मूंछ कट इस प्रकार से रखना शुरू करता है। और 6th स्टेज आती है जब वो बिल्कुल सिंपल भोला भाला ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, चप्पल हवाई चप्पल ही पहन के, जो कभी बहुत अपने आप को टिप टॉप होके निकलता था आज वो स्लीपर में ही, पैंटलून के अंदर ही निकलना शुरू कर देता है। इतना अपने लिए केयरलेस हो जाता है कि स्पेक्टेकल्स जो है, उसके चश्मे हैं जो उसकी नाक पर, नोज़ पर आ जाते हैं। ये स्पेक्टेकल्स होता है, ध्यान रखना, इंग्लिश में नाउन के कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे ट्राउज़र नहीं होता, ट्राउज़र्स होता है, उसकी टांगें 2 होती हैं। स्पेक्टेकल्स चश्मे की, उसके कांच, उसकी आंखें 2 होती हैं। इस प्रकार से और भी शब्द हैं। खैर, the spectacles very beautifully has been used here by William Shakespeare। और फिर उसके बाद में जो लास्ट स्टेज आती है, बिल्कुल जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है, मुंह में दांत नहीं होते, उस प्रकार से लास्ट अवस्था में वो ऐसा पहुंच जाता है। और फिर धीरे धीरे उसके दांत, आँख, उसका टेस्ट, उसकी एवरीथिंग, हर चीज़ में कटौती सी महसूस होती है। वो वैसा हर सेंसेस उसके डिमिनिश महसूस, फेडेड अवे सी महसूस होती हैं, विदर्ड सी महसूस होती हैं। इस प्रकार से शेक्सपियर साहब ने बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोइम को फिल्माया है। एक्चुअली वो खुद एक ग्लोब थिएटर के मालिक थे, चूँकि जब वो थिएटर के मालिक थे तो ये स्वाभाविक है उनके लिए, वेरी नेचुरल to present, to delineate all things in terms of man and woman practically in an empirical approach। And he is really a word painter, master of figure of speech, and अंग्रेजी साहित्य आकाश के सूर्य माने जाते हैं। द सन ऑफ द स्काई ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मास्टर ऑफ मेटाफर, ए वर्ल्ड मैचलेस पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हिंदी की डिमांड करने लग जाते हैं। गंगानगर, रायसी नगर एरिया में अपने राजस्थानी, पंजाबी, मारवाड़ी स्पीकिंग बच्चे हैं, तो वो धीरे धीरे जब मैं इंग्लिश से हिंदी में आता हूँ, वापस जाता हूँ, तो मेरा खुद का गला ख़राब होने लगता है। मैं खुद स्वीकार करता हूँ इस बात को। ओके डियर स्टूडेंट्स, खैर आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक इसको सुना, बहुत अच्छे तरीके से सुना। तो प्रिय विद्यार्थियों, शेक्सपियर साहब अपने आप में एक मैचलेस वर्ल्ड पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने ह्यूमन माइंड को पेनिट्रेट करके रख दिया। अपने जीवन में उन्होंने कितने सारी ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ लिखी, फिर ट्रेजाई कॉमेडीज़ लिखी, बहुत ही नई प्रकार की इन्वेंशन कर दी। और सानेट जो पेट्रार्क ने लिखी थी, इटली में लिखी थी, उसकी राइमिंग स्कीम में टोटली ऐसा मूलचूल परिवर्तन करके नया म्यूजिक शेप दे दिया। लगता है कि सारे वेद, पुराण और श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान उनके दिमाग में उड़ेला हुआ उन्होंने पढ़ा हुआ है। जय हिंद, जय भारत।